Founder Chabi Mehta's inspiring initiative, Young Authors Launchpad and Public Speaking Competition, continues to make waves by empowering children in the age group of 3 to 14 years, encouraging them to express themselves through both writing and public speaking. This remarkable event concluded with a grand finale on 29th of September at India International Centre, Lodi Road, New Delhi. The event commenced with the traditional Hindu ritual of Deep Prajalan. The highlight of the event was the release of books written by talented young authors in the age group of 3 to 16 years, showcasing their unique perspectives and creative expression. 15 to 20 young speakers mesmerized the audience with their confidence and stage presence, leaving a lasting impression. Chavi Mehta, the driving force behind this initiative, has worked tirelessly to guide and groom these young participants, as each author and speaker was awarded with certificates and prizes celebrating their outstanding contributions. The event was attended by many prominent personalities from Delhi, which further highlighted the importance of the competition. In interaction with the media, the young writers spoke passionately about their stories, each of the young speakers giving a glimpse of their vivid imagination and thoughtful ideas. They were praised for their creativity and depth. Watch this report, Delhi. My name is Unnati Varshne and I'm participating in Young Authors Launchpad group, and there's a public speaking championship also going on, and my book's name is Besties. Its main purpose is to convey the message of friendship. Like, we have to do friendship that becomes friendly, and like in difficult times we get the help of friendship. Hi everyone, my name is Samanvi Gupta and today we are in the Young Authors Launchpad group. Our book is being launched. We are very excited for that. So my hobbies are playing keyboard and singing. So the main purpose of this book is to cherish the memories we have made and always remember them. So as an adult, when we will read this book, we would always remember each other and we would just cherish the memories. Thank you. Good morning everyone, my name is Ipshita Kochhar and today I will talk about my book. We are at a platform, Young Authors Launchpad. We are really excited about our book launching. Our book's name is Besties. So we are very excited about it, and the main purpose of this book is that we convey the message of our beautiful friendship, how we met each other. मेरा नाम पवनदीप सिंह कोहली है और आज हम छवि मेहता के एक इनिशिएटिव यंग ऑथर्स लॉन्च पैड पे आए हुए हैं। एंड ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो छवि ने शुरू किया है, जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन है यंग किड्स का फ्रॉम 3 to 14 ईयर्स, और उन किड्स ने अपनी बुक भी लिखी है जो एक बहुत ही बड़ी बात है। आज हम अपनी बात करें तो एट दी एज ऑफ 13-14 शायद हमें पता भी नहीं था कि कैसे चीज़ें मूव होती हैं, बट today this generation is doing so good and congratulations to Chavi for this initiative, and I think ये चीज़ बहुत बड़ी बनेगी और बहुत आगे तक जाएगी। देश भर में जो 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बनाने का एक मिशन है मेरा, और जब देखता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल रहे हैं जहाँ बच्चे पब्लिक स्पीकर बन रहे हैं और बच्चे ऑथर बन रहे हैं, तो इतनी प्रेरणा मिलती है और इन बच्चों को देख करके इतना मोटिवेशन मिलता है कि लगता है कि हमारा देश का भविष्य बिल्कुल सही हाथों में है। और ये जो प्लेटफॉर्म छवि जी ने तैयार किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। So I'm Chavi Mehta, founder of Young Authors Launchpad. I have recently written a book by the name Conscious Parenting, and I've realized that it has given me a different kind of equity. एक बहुत different सा एक standard दे दिया है कि लोग पूछते हैं. So I realized
3 महीने में ही मेरी बुक सिलेक्ट हो गई जर्मनी जाने के लिए। तो आई वाज सो एक्साइटेड। छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा, मेरे स्टूडेंट से, हमारी बुक कब जर्मनी जाएगी? सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट मॉड्यूल कि छोटे बच्चों को किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं अपनी स्टोरी बुक्स लिखने के लिए। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई एम ऑन अ मिशन, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे रीडिंग और राइटिंग से बहुत दूर होते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो उसको उस दुनिया से पास लाने के लिए कि वो रीडिंग और राइटिंग की दुनिया में रहें और आगे बढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। सबसे छोटा पार्टिसिपेंट, बिलीव नहीं करेंगे, 3 साल 8 महीने का है। दैट्स द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड कि सब बच्चे स्टेज पर आए एंड दे जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ, देयर व्यूज़ ऑन इट। बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक्स लिए हैं बच्चों ने स्पीचेस के लिए एंड आई एम सो एक्साइटेड कि वो बच्चे स्टेज पर आए हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश बर्राता है और मैं फाउंडर हूँ theDiva.com का। दीवा भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत की अलग अलग कोने से जहाँ भी साड़ी बनती है उसे सीधा कस्टमर्स तक पहुँचाने का काम कर रहा है और भारत के कल्चर को हम पूरी दुनिया तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में शार्क टैंक इंडिया सीज़न 3 पे टीवी शो में आपने हमें देखा होगा। और आज मैं यहाँ पे आया था यंग ऑथर्स लॉन्च पैड और पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप इस इवेंट में। काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं, क्योंकि 5-5 साल के 7-7 साल के बच्चों ने किताबें लिखी हैं, वो आके स्टेज पे बात कर रहे हैं। वही बात हम कह रहे थे कि जिस उम्र में अपना नाम नहीं लिखने आता उस उम्र बच्चे किताबें लिख रहे हैं। तो काफ़ी इंस्पिरेशन मेरे को मिली यहाँ से बच्चों से कि हमें भी और आगे करने का लगता है। यार छोटे छोटे बच्चे ये कर रहे हैं तो हम तो 23-24 साल उम्र होगी, तो और इंस्पिरेशन मिली, आगे हम भी ऐसे करते रहेंगे। और मैं तो ये आशा करता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे अभी इतना कर रहे हैं तो जब ये हमारी उम्र में आएंगे तो ये क्या करेंगे। तो भारत का फ्यूचर जो बोलते हैं हम कि बच्चे हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो फ्यूचर है। Hi, I'm Himanshu Agarwal, father of Hitarth Agarwal, and I'm here for his first book launch. Very excited, very proud of him. I believe that every child should be given, a platform where they can identify their skills, and this is such a beautiful platform by Chavi Mehta. I must say that it's a great platform for children and young authors where they can express themselves and they can really take this wonderful skill ahead. So I wish everyone all the very best. Thank you. So I'm here for public speaking championship as well as a book launch, and my daughter has written a book, and she's just 7 years old, and she has written a book. It seems like a very big achievement as a parent that a 7-year-old kid has written a book, and I think Chavi had been continuously guiding her and letting her to be on the same track to get finally her book to be launched. So I would really congratulate Chavi for the effort that she's made with all the kids, and thank you. Sonia, Hitarth's mother. Today I am here to launch my son, The Secret of the Shining Cave book launch. Thanks to Chavi ma'am to inspire my child. Thank you so much. Hi, my name is Charu. I am here today at this forum to attend this event where my daughter Chmer is launching her book. I have attended many events like this before, but I think the work done by Chavi is exceptional. She's given this beautiful platform to the kids where they are motivated, guided from time to time to express themselves. Big thanks to Chavi and kudos for her hard work and the kind of inspiration she's giving to the kids to do their best and give their best and becoming the budding authors for future. Thank you so much. My name is Hitarth Agarwal. I am a 10 years old dreamer and swimmer. Today I came to Young Author Launchpad and I have launched my book Lily and the Secret of the Shining Cave. I have written this book. It is described adventures of Lily, a 10 years girl who also seems to be the protagonist of my story. My favorite part of my story is how Lily returned back home, and my favorite character is Peter, who is the head of the team's detectives. And I have written this book by getting inspired by the famous Indian author Ruskin Bond. Hi, my name is Neha Jain Sapra. I am the co-founder of Credence Investments. I want to congratulate Chavi Mehta for this amazing program, championship public speaking program for little ones starting from 3 years old, as young as 3 years old. When I was 3 years old, I was not even aware about how to walk properly, how to eat properly, and these days kids are writing books.
I think all thanks and kudos to Chavi, who's giving this platform to these little young ones to bloom and show their creativity in India and in coming days internationally also.